Good morning to every student. Today we are going to discuss some problems of differentiability. The last class we see that what is the geometrical meaning of differentiability and what is relation between continuity and differentiability, and these some problems. So what is the relation between differentiability and continuity? Every differentiable function is continuous, but converse is not, may or may not be true. जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हम से फंक्शन निश्चित रूपे कंटिन्यूस हम, बट कन्वर्स इज नॉट और मे नॉट बी ट्रू. So today we discuss some problems of differentiability and continuity. So if we ask test the continuity and differentiability of the function, so in such case first we test differentiability. If the function is differentiability, then it must be continuous. So it is not necessary to test continuity of the function since it is differentiable. जदि आमको डिफरेंशिएबिलिटी आ कंटिन्यूटी टेस्ट करिया कहियो तो प्रथम आम डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करिया. जदि डिफरेंशिएबल हे जाउची तो ऑटोमेटिकली इट इज कंटिन्यूअस. जदि डिफरेंशिएबल हबोनी बेला आम फर्दर कंटिन्यूअस टेस्ट करिया को पड़िबो. वन क्वेश्चन, टेस्ट डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx is equal to 1 minus 1 by x at x is equal to 1. So clearly answer here fx is equal to 1 minus 1 by x mode. This is the modulus function and this will be equal to x minus 1 by x mode. Okay, so here a is equal to, here fx is equal to this one and this point x is equal to 1. That means a is equal to 1. A1 means what is f of a? So f of a is equal to f of 1. And f of 1 is equal to, substitute 1 in place of x. So this is 1 minus 1 by 1 no more. So 1 minus 1, 0 by 1 is equal to 0. Now we find right hand derivative at x equal to 1 and left hand derivative at x equal to 1. Right hand derivative at x is equal to 1. We know f dash a plus equal to limit h dash to 0, limit h dash to 0 f of a plus h minus f of a whole by h. So here a is equal to 1, that is f dash 1 plus equal to limit h dash to 0 f of 1 plus h minus f of 1 whole by h. So this is equal to limit h dash to 0 f of 1 plus h means you have to substitute 1 plus h in place of x of the given function. Here fx equal to this one. So a function रे आम एक्जार कौन पकेबा ना 1 plus h पकेबा. 1 plus h minus 1 by 1 plus h रो मोड minus f of 1 and f of 1 is equal to 0 whole by h. So this is the plus 1 minus 1 cancel. So this is equal to limit h dash to 0 h by 1 plus h mode by h. Okay, now we eliminate the modulus function. So since h tends to 0 means it may be 0 point something, so h by 1 plus h by 1 plus h indicate positive value. हमें लिमिट टा बाहर करिया पूर्व आमको मॉडुलस टा को उठाया पड़ियो. तो मोड भितर जहाँ अछि तार वैल्यू टा पॉजिटिव इंडिकेट करछि ना नेगेटिव इंडिकेट करछि सेटा देखिया पड़ियो. सो h by 1 plus h रा जेतु h tends to 0 means h is a very small positive number. So एटा पॉजिटिव नंबर 1 by 1 plus 0 1 plus पॉजिटिव नंबर. सो ए टोटल ला कोन होछि गोटे पॉजिटिव नंबर. तो टोटल ला पॉजिटिव नंबर हेले भीतरटा जेतु पॉजिटिव नंबर होछि तो मोडटा उठले सेति रहइबो. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h by 1 plus h whole by h. Okay, so h is cancel. So this is equal to limit h टेंड्स टू 0 1 by 1 plus h.
सो बर्तमान ये h आम 0 पकेदा h जगह 0 पकेले 1 बाई 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 है। तो द राइट हैंड डेरिवेटिव देख ए पार्टा कौन होची ना यार वैल्यूला जेहेतु गोटे पॉजिटिव क्वांटिटी कहीं 0 पॉइंट समथिंग इज ए पॉजिटिव एटा पॉजिटिव है 1 प्लस 0 अगेन ए पॉजिटिव जेहेतु मोर भीतरटा टोटल पॉजिटिव है मोरटा उठले तुम से हम बिकज मोर x इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन 0 मोर x इक्वल टू माइनस x इफ x लेस देन और इक्वल टू 0 तेणु ये है ए h कैंसल कली ये 1 बाई 1 प्लस h पकली बर्तमान कैंसल कला कॉमन फैक्टर कैंसल कला जाइरी लिमिटा तुम सब्स्टिट्यूट करियो तो 1 बाई 1 प्लस 0 ले 1 है। सो द राइट हैंड डेरिवेटिव इज 1 एंड व्हाट विल बी द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव you know the formula f dash a minus so f dash a minus equal to limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a whole by minus h you know the left derivative formula but here a is equal to 1 so f dash 1 minus f dash 1 minus equal to limit h tends to 0 f of 1 minus h minus f of 1 whole by minus h. Now we substitute 1 minus h in place of x. बर्तमान ये आम कौन करिया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 minus h पकेब x जगह ए फंक्शन रे पकेबा सो दिस इज 1 minus h minus 1 by 1 minus h रो मोर ओके minus f of 1 so f of 1 is equal to 0 whole by minus h and this is equal to limit h tends to 0 and plus 1 minus 1 cancel so this is minus h by 1 minus h more whole by minus h so this is equal to ये कौन असला ना minus h by 1 minus h and this is equal to limit h tends to 0 माइनस टा डिनोमिनेटर हमें मल्टीप्लाई कर दें सो दिस इज इक्वल h बाय h माइनस 1 रो मोड हैला होल बाय माइनस h हैला अच्छा सो h बाय h माइनस 1 इंडिकेट इट्स पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू नाउ वी एग्जामिन देखो मॉडुलस रहला ना ए मोड भीतर जो क्वांटिटी रे अछि से क्वांटिटी रो वैल्यूटा पॉजिटिव इंडिकेट करछि ना नेगेटिव इंडिकेट करछि हम सेटा जानिया दरकार निश्चित रूपे अच्छा जदि h 0 पॉइंट समथिंग एटा होचे पॉजिटिव 0 पॉइंट समथिंग माइनस 1 0 पॉइंट समथिंग माइनस 1 तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू एटा होचे नेगेटिव हैला h माइनस 1 दा नेगेटिव h दा पॉजिटिव बाय नेगेटिव दिस इज ए नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बाय नेगेटिव कोन हबो नेगेटिव जेहेतु यार मूल्यटा नेगेटिव हे गेला मोट आउटले कोन हबो ना दिस इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 minus h by h minus 1 whole by minus h understand so यार वैल्यू जेहेतु नेगेटिव हैला भला बुझे बोले यार वैल्यू जेतु एटा पॉजिटिव तोला होचे नेगेटिव पॉजिटिव बाय नेगेटिव होचे नेगेटिव जेहेतु मोर भीतर क्वांटिटी नेगेटिव हैला मोर टोटल कोन माइनस सब सेति हो सो ए h को ए माइनस को माइनस कैंसिल हैला h को h कैंसिल हैला सो कैंसिल हैला पर कौन रहिला ना लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 1 by h minus 1 हैला तो 1 by h minus 1 एबे लिमिट हमें पकेले कोन होची ना 1 by 0 minus 1 so this is equal to minus 1 so the right hand derivative is plus 1 and the left hand derivative is minus 1 so LHD is not equal to RHD therefore the function is not differentiable at x is equal to minus 1 so fx is not differentiable at x is equal to minus 1 जेहेतु फंक्शन डिफरेंशियल हेलानी now we test again continuity of the function so fx equal to x minus 1 by x is not differentiable at x equal to 1 because left hand derivative is not equal to right hand derivative now test for continuity at x is equal to 1 so how to test continuity first we find the limiting value and functional value if limiting value exists then we find functional value
If they are equal, then it is continuous. If they are not equal, then it is not continuous. So for limit of the existence, we find the left hand limit and right hand limit, because the function clearly modulus function. So left hand limit LHL at x is equal to 1. Left hand limit at x is equal to 1, how to represent? Limit x tends to 1 minus fx, so fx equal to x minus 1 by x, and this is equal to, you know how to evaluate the left hand limit. Limit h tends to 0, substitute 1 minus h in place of x. 1 minus h minus 1 by 1 minus h removed. Okay, so minus 1 plus 1 cancel. This is equal to limit h tends to 0 minus h by 1 minus h. So minus h by 1 minus h mode equal to limit h tends to 0 h by h minus 1 mode. Okay, so h by h minus 1, h by h minus 1 indicate negative value, because h is positive, h minus 1 is negative. So positive by negative is negative. If mode under the function is negative, after taking modulus, it will be minus of this one. So this is equal to limit h tends to 0. एटा कौन होला ना minus of h by h minus 1 होला. So h tends to 0 अछि ना, बर्तमान में 0 पकेले minus 0 by 0 minus 1, and this is equal to 1. So the left hand limit is 1. Sorry, 0 by 0 minus 1 is equal to 0, because 0 by 0, 0 by 1 equal to 0. So left hand limit is 0, and what will be right hand limit? RHL at x is equal to 1. Right hand limit at x equal to 1. Limit x tends to 1 plus fx. Fx equal this one, x by x minus 1, and this equal to limit h tends to 0 1 plus h minus 1 by 1 plus h. Okay, because you substitute 1 plus h in place of x, plus 1 minus 1 cancel. So this is the limit h tends to 0 h by 1 plus h removed. But h by h plus 1 is a positive quantity, because this one is a positive, 1 plus positive, 1 plus positive, positive. So limit h tends to 0 is h by 1 plus h. Okay, substitute h equal to 0, limit id पके 0 by 1 plus 0 equal to 0. So LHL equal to 0, RHL equal to 0, and what is the value of the function? F of 1. F of 1 is also 0. Therefore LHL equal to RHL equal to f of 1, value of the function. So fx is continuous at x is equal to 1, but not differentiable. तेणु जो फंक्शन टा डिफरेंशियल हबनी से फंक्शन टा तुमको अगेन टेस्ट करिया पड़ियो कंटिन्यूटी कंटिन्यूस बोली. जदि डिफरेंशियल हेया था ऑटोमेटिकली इट विल बी कंटिन्यूस लिखि पारता था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question, fx equal to greatest integer function x square plus 1 at x is equal to minus 1 by 2. Now we test differentiability and continuity. Answer. Here fx equal to bracket x square plus 1 and x is equal to minus 1. That is a is equal to minus 1 by 2 and fx equal to x square plus 1 the greatest integer function. So what is value of f of a? So f of a is equal to f of minus 1 by 2. So f of minus 1 by 2 equal to minus 1 by 2 square plus 1. So this equal 1 by 4 plus 1. So 1 by 4 means 0.25 plus 1. So this equal to 1.25. So 1.25 bracket function hoche 1. You know. So f of 1 by f of minus 1 by 2 is equal to 1. Okay. So this is equal to,
Now right hand derivative at x equal to 1. Right hand derivative at x equal to minus 1 by 2. So f at s minus 1 by 2 plus f at s minus 1 by 2 plus limit s tends to 0 f half minus 1 by 2 plus h f half a plus h minus f half a minus f half minus 1 by 2 by h. So this is equal to limit h tends to 0 f of minus 1 by 2 plus h means minus 1 by 2 plus h square plus 1 greatest integer function minus f of minus 1 by 2 equal to 1 whole by h, and this equal to limit h tends to 0 minus 1 by 2 square equal to 1 by 4 plus h square plus 2ab. So minus 1 by 2 into h into 2. So this is equal to minus h. Okay. Plus 1 minus 1 by h. So this is equal to limit h tends to 0. So this is equal to what is its value? 1 by 4 plus h square minus h plus 1. Since h is a very small positive number, इटा टोटल ब्रैकेट फंक्शन अच्छी ना, तो यार वैल्यू लागू हमको डिटरमिनेशन करिया पड़ियो, लिमिट टा बाहर करिया पूर्वरु यार वैल्यू लागू हमको बाहर करिया पड़ियो. दिस इज ए इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ए सबले गुटे इंटीजर इंडिकेट करियो. सो यार वैल्यू केते आसे देखो 1 by 4 माने केते 0.25 0.25 प्लस 1 मतलब 1.25 हैला. मन कर तुम h रा जदी नंबर 0.00001 नंबर हेले h स्क्वायर वैल्यू कोन हो 0.00001 हैला माइनस 0.001 एटा केते आसला 1.25 हैला. 1.25 रे तुम 0. h स्क्वायर माने आउरी संख्या वैल्यू कमी दियो आउरी बुझी पारछ ना. 1.25 रे तमे एतिक जदी h दा 0.001 कंसीडर करलो h स्क्वायर माने कोन हो 0.00001 हबो. सो 1.25 माइनस h एतिक होले कोन हबो 1 पॉइंट समथिंग आ रहइबो. एटा केबे भी 1 हे जोनी 1 पॉइंट समथिंग हबो. तो 0 पॉइंट समथिंग हबो केटा केबे नाही. तो यार वैल्यू ला सबले 1 पॉइंट समथिंग हबो. 1 पॉइंट समथिंग रो ब्रैकेट फंक्शन केते 1. सो यार वैल्यू ला हमर 1 हैला 1 minus 1 by h. So this is equal to limit h tends to 0 0 by h ला. तो 0 by h means h tends to 0 means 0 point something. तो 0 by 0 point something 0 by 0 point something equal to 0 हबो. बुझिलो तो ना ये फंक्शन रो वैल्यू ला केते देखो पले 1 by 4 माने 0.25 हैला. ये 1 अछि प्लस अछि बेले 1.25 हैला. 1.25 रे तुम h स्क्वायर टा ऐड करियो बेले 1 पॉइंट केते हबो 25001 हैला. ताइरे h माइनस करियो 0.001 माइनस करले कोन 1 पॉइंट समथिंग आ रहियो ना. 0 पॉइंट समथिंग केबेल हबोनी ना एक एते सान हे जोनी ना. तो 1 पॉइंट समथिंग हेबो 1 पॉइंट समथिंग रो ब्रैकेट फंक्शन 1 हैला. एली 1 अछि 1 minus 1 0 हैला न्यूमरेटर 0 हैला. 0 by h h माने कोन नियरली इक्वल टू 0 ना ना नहीं 0 पॉइंट समथिंग हैला 0 by 0 पॉइंट समथिंग ला 0 हैला. सो राइट हैंड डेरिवेटिव हेउची तमर 0. So what will be left hand derivative? LHD at x is equal to minus half. So f at s minus half minus. So f at s minus half minus equal to limit h tends to 0 f half minus 1 by 2 minus h minus f minus 1 by 2 whole by minus h. So this is equal to limit h tends to 0 f minus 1 by 2 minus h means minus 1 by 2 minus h rho square plus 1 greatest integer function. Okay, greatest integer bracket function value minus f minus half means 1 by minus h. So its value is equal to limit h tends to 0 here 1 by 2 minus 1 by 2 square means 1 by 4 plus h square
plus h, because minus 1 by 2 into minus h by 2 into 2, so this is h minus 1 by minus h. So this is equal to, again limit h tends to 0, again यार value केता होबो ना 1 by 4 होची 0.25 एटा होची ओके plus 1 अछि 1 by 4 plus h square plus h plus 1 एटा गोटे plus 1 रहबो अच्छा plus 1 minus 1 ला हेले यार value होची 0.25 plus 1 1.25 1.25 एटा h स्क्वायर माने 0.0001 हला h होची 0.001 એટલે 1.225001 लाइक दैट तो 1 पॉइंट समथिंग हबो 2 पॉइंट एड आइ जोनी 1 पॉइंट समथिंग रहबो तो 1 पॉइंट समथिंग रो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अछि 1 हला तो 1 minus 1 by minus h हला सो लिमिट h टेंड्स टू 0 एटा 0 गेला by minus h हला एटा भी 1 पॉइंट समथिंग हला 1 पॉइंट समथिंग ब्रैकेट फंक्शन 1 हला 1 minus 1 0 हला 0 by minus h केता हबो सो दिस इज इक्वल टू 0 सो LHD f dash minus 1 by 2 plus equal to f dash minus 1 by 2 plus, therefore the function is differentiable fx equal to bracket x square plus 1 is differentiable at x is equal to minus half. Okay, that is f dash, so f dash minus 1 by 2 plus is equal to f dash minus 1 by 2 minus, therefore fx is differentiable at x is equal to minus 1 by 2. We know every differential function is continuous. It is also continuous at x is equal to minus 1 by 2 because every differential function is continuous. So next question. So next question, fx equal to x by 1 plus mod x at x equal to 0. We test continuity and differentiability. Answer. Here fx equal to x by 1 plus mod x and f of 0 equal to 0 by 1 plus 0 mod. So this is equal to 0 by 1 plus 0. So this is equal to 0. Now we test differentiability at x equal to right hand derivative. Differentiability at x equal to 0. So right hand derivative at x equal to 0. So f dash 0 plus. So f dash 0 plus equal to limit h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 whole by h. So this equal to limit h tends to 0 0 plus h means h. So f of h equal to h by 1 plus mod h minus f of 0 equal to 0 whole by h. So this equal to limit h tends to 0 h by 1 plus mod h. You know h is a positive quantity, so mod h equal to h by h. So h cancel. So this is equal to limit h tends to 0 1 by 1 plus h ला तो 1 by 1 plus h ला केतो उससे 1 by 1 plus 0. So this is equal to 1. So the right hand derivative is 1. What is left hand derivative? Left hand derivative at x equal to 0. That is f dash 0 minus. So f dash 0 minus equal to limit h tends to 0 f of 0 minus h minus f of 0 whole by minus h. So this is equal to limit h tends to 0 f of minus h. F of minus h means substitute minus h in place of x. X जगह कौन पकेबो minus h पकेबो. Here fx equal to this one, so this equal to minus h by 1 plus minus h mod f of 0. So f of 0 equal to 0 whole by minus h. So this is equal to limit h tends to 0 minus h by 1 plus mod minus h.
minus h is a negative quantity. So mode of minus h means minus of minus h, but minus of minus h equal to h by minus h minus h cancel. So this is equal to limit h tends to 0 1 by 1 plus h ହେଲା. तो 1 by 1 plus h ର limiting value କେତେ 1 by 1 plus 0. So this is equal to 1. So left hand derivative is 1, right hand derivative is 1, that is f dash 0 plus equal to f dash 0 minus, and this is equal to 1. Therefore fx equal to x by 1 plus mod x is differentiable at x equal to 0. It is also continuous. It is also continuous at x equal to 0, because you know every differentiable function is continuous. Now we test fx equal to mod sin x at x is equal to pi. Answer: here f of x equal to mod sin x, and what will be f of pi? So f of pi equal to sin pi ro mod. So sin pi is equal to 0, but 0 mod equal to 0. So first we find the right hand derivative. A right hand derivative at x is equal to pi. That means f dash pi plus. So f dash pi plus equal to limit h tends to 0 f of pi plus h minus f of pi whole by h. So f of pi plus h means limit h tends to 0, substitute pi plus h in place of x. So this is sin of pi plus h the mod minus f of pi equal to 0 by h. Limit h tends to 0, sin pi plus h, pi plus theta. Pi plus means lies in third quadrant. In third quadrant sin is negative. So sin of pi plus h is equal to minus sin h mod by h. But as minus sin h is a positive quantity because h tends to 0, 0 point something. So 0 point something हेले sin h टा कौन हम positive quantity, किंतु minus sin h is a negative quantity. So minus sin h is a negative quantity. So after taking modulus, this will be limit h tends to 0 minus sin h टा कौन हम minus of minus sin h by h. देखो sin h टा पॉजिटिव हो काई ना 0 point something sin of 0 point something बोले कौन होला फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू रहियो ना जहां ले ले एटा तेनो एटा sin h टा पॉजिटिव है माइनस sin h टा कौन होती नेगेटिव होला एले मोड भीतर संख्या जदी नेगेटिव होची मोड आउट ले कौन हो माइनस ऑफ से होबना ना ये तो माइनस ऑफ माइनस sin h बाय h होला एले माइनस ऑफ माइनस sin h बोले कौन sin h होला. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 sin h by h होला, but sin h by h equal to 1. This is the formula of this limit, standard formula. And what will be f dash pi minus? So f dash pi minus equal to limit h tends to 0 f of pi minus h minus f of pi whole by minus h a minus h minus f of a by minus h. So this is equal to limit h tends to 0, ये कौन होला sin of pi minus h minus f of pi 0 whole by minus h. So limit h tends to 0 the mod, but sin of pi minus h lies in second quadrant kind 1 to san होला second quadrant sin is positive. So sin of pi minus h equal to sin h the mod minus 0 by minus h, but sin h is a positive quantity. After taking modulus sin h equal to sin h na nahi. So this is equal to limit h tends to 0. So this is equal to sin h by minus h, and this is equal to sin h by h equal to 1. So minus taking to outside. So this is equal to minus 1 नामु बाहर काढिया पड़ियो. तो माइनस लिमिट h tends to 0 sin h by h equal to 1. तो minus 1 होला.
तो right hand derivative 1, left hand derivative -1. So mod sin x is not differentiable at x is equal to pi. Now we test continuity of the function because this function is not differentiable. बर्तमान हमको continuous test करिया पड़ियो. So first we find the left hand limit and right hand limit also. What is the right hand limit? Right hand limit at x equal to pi, that is limit extends to pi plus fx sin x mode. Okay, and this is equal to limit h tends to 0 sin of pi plus h mode. Limit h tends to 0 कहीं एग्जाम में पाई प्लस एच पकेबा sin of pi plus h equal to minus sin h mode. Minus sin h is a negative quantity, so this is the limit h tends to 0 minus or minus sin h, and this is limit h tends to 0 sin h, but sin h equal to 0 because h tends to 0 means 0 पकेबा, sin 0 equal to 0. So what is the left hand limit? Left hand limit at x equal to pi. So limit extends to pi minus sin x mode. So this is equal to limit h tends to 0 sin of pi minus h mode. But sin of pi minus h means sin h mode. But sin h mode is a positive quantity. Sin h is a positive quantity. So after taking modulus, it will be sin h. Okay. So this is sin h. So sin 0 equal to 0. So left hand limit is 0. Right hand limit is 0. Value of the function is 0. LHL equal to RHL is equal to value of the function equal to 0. So fx is continuous at x equal to pi. Mod sin x, mod x is continuous on everywhere because sin x is continuous na, mod sin x is continuous on everywhere. But sin x is not differentiable. Mod sin x is not differentiable if sin x equal to 0. Last class रे भी कहथिले mod fx is continuous, but mod fx is not differentiable. The value of x provided f of x is equal to 0. तो मैं मोर sin x अच्छी एटा केतला डिफरेंशियल होबनी ना sin x टा 0 करियो, sin x टा 0 कले x टा कोन होते प्लस और माइनस n पाई, और सॉरी x is equal to n पाई, कम n belongs to z set, ए पॉइंट डिफरेंशियल होबो नाही. तो mod sin x is not differentiable at x is equal to pi, but it is continuous at x is equal to pi. So next question, now we test fx equal to 1 minus e to the minus x by x if x not equal to 0 and 1 if x equal to 0 at x equal to 0. We test the differentiability and the continuity of the following function. Answer 1. Answer. So first we find the right hand derivative. Here fx equal to this one if x not equal to 0. If x equal to 0, then f of 0 is equal to 1 given the condition. So what will be right hand derivative at x equal to 0? F dash 0 plus. So f dash 0 plus equal to, we write limit s tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 whole by h. So this is limit s tends to 0 f of 0 plus h means f of h. 0 plus means x greater than 0. That means x not equal to 0. If x not equal to 0, then fx equal to this one. So f of h means substitute h in place of x in that function. A function ने तुम x जगह कौन पकेबा h पकेबा. तो 1 minus e to the minus h, okay, by h minus f of 0 is equal to 1 whole by h. Now taking LCM, so this is limit h tends to 0
after taking LCM 1 minus e to the minus h by h square, and this is equal to limit h tends to 0, okay, 1 minus h minus e to the power minus h, okay, whole by h square, whole by h square. So how to find its limit? Limit h tends to 0 अच्छी. So if we put h is equal to 0, what will be limit? जदि हम h रे 0 पके कौन होची 1 minus 0 e to the minus 0, but e to the minus 0 equal to e to the 0, e to the 0 होची 1, 1 minus 0 minus 1, तो 1 minus 1 0 by 0 form. So this is 0 by 0 form हैला. So 0 by 0 form हैला. हमर ଗୋଟେ फॉर्मूला अछि limit x tends to 0, limit x tends to 0 e to the x minus 1 by x is equal to 1 हबो. हेले एडी कोन h स्क्वायर अछि ना, ए फॉर्मूला एटा एडजस्टमेंट हेई परिबो नाही. पहिले ए फॉर्मूला द्वारा जदि गोटे लिमिट टी स्टैंडर्ड फॉर्मूला द्वारा जदि हेई पार नथियो सेही आमे कोन करिया पड़ियो ना लिमिट रो से एक्सपेंशन फंक्शन रो एक्सपेंशन फॉर्मूला पकेया पड़ियो. देखो जो प्रॉब्लम रे लिमिट रो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करी जदि आमे करि पारियानी लास्टली आमे सारे एक्सपेंशन फॉर्मूला पकेला का सेही हेई पारिबो. तेणु आम ये बाध्य होगा e to the minus h एक्सपेंशन फॉर्मूला पकाया पड़ो कहीं ए फॉर्मूला द्वारा एडजस्टमेंट हो पार ना. तेणु e to the x रो एक्सपेंशन फॉर्मूला पकाया पड़ो. सो व्हाट इज एक्सपेंशन फॉर्मूला ऑफ e to the x? आम जान से फर्स्ट ईयर क्लास लिमिट रे भी कहथिबो जे e to the x रो एक्सपेंशन कोन ना 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus dot 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 रहती. सो e to the minus h माने आम ये पकेबा e to the minus h माने आम पकेबा 1 plus minus h एटा कोन हबो minus h रो स्क्वायर. सो दिस इज h स्क्वायर by 2 factorial एटा केतला minus h cube by 3 रो factorial plus dot 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 एती हबो. सो एटा आम बाध्य होबा जे एक्सपेंशन फार्मूला पकाया पय हला कारण से लिमिट रे एडजस्ट से फार्मूला द्वारा एडजस्टमेंट हे परिबो नाही. दिस इज द वेरी इंपोर्टेंट प्रॉब्लम एंड रिमेंबर दिस वन. सो दिस इक्वल टू limit h tends to 0 1 minus h minus e to the minus h expansion होची 1 minus h plus h square by 2 factorial minus h cube by 3 factorial. Next term will be plus h fourth by 4 factorial. m जे आसीबो ना नाही गोटे प्लस गोटे माइनस आसीयो माइनस डॉट 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 एति आसीयो आरो पूरा इनफिनिट सीरीज फॉर्म एटा इनफिनिट टर्म इज देयर सब जे h पावरटा बड़ी बड़ी जाउची. दिस इज ए इनफिनिट सीरीज नॉट फाइनाइट सीरीज. ओके इनफिनिट सीरीज होल बाय h स्क्वायर. देखो पहले यार लिमिट हमें बाहर करिया एटा प्लस 1 अछि माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल एटा माइनस h अछि माइनस टा गुणले प्लस h हबो ए h कैंसिल हला. सो बर्तन एटा कैंसिल करला पर एक्सपेंशन टा पकेलु कॉमन फैक्टर कैंसिल कला पर तुम जाई लिमिट टा पकेबे. सो लिमिट टा पकेले कौन होची लिमिट h tends to 0. सो ये कौन होला माइनस टा मल्टीप्लाई कर लिखि दियो एटा केते अछि माइनस तो एटा थाउनल माइनस ऑफ h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल ला एटा केते रहला माइनस टा आगे अछि h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल होला h क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल ला h फोर्थ बाय 4 फैक्टोरियल ला तापर माइनस h फिफ्थ बाय 5 फैक्टोरियल h रो पाटा बड़ी बड़ी जाइछि ना. आज आम जेहेतु ये डिनोमिनेटर h स्क्वायर अच्छी आम कौन करिया न्यूमरेटर रु h स्क्वायर टा कॉमन काढिया h स्क्वायर टा कैंसिल करिया पई मो न्यूमरेटर रु h स्क्वायर टा कॉमन काढी. तो h स्क्वायर टा जब कॉमन बाहर करी एडी केते रहला माइनस तो अच्छी थाउ एडी हमर h स्क्वायर टा कॉमन काले एडी केते रहला 1/2 फैक्टर रहला एडी केते रहला माइनस h/3 फैक्टर रहला तापर कोन रहइबो प्लस h स्क्वायर बाय 4 फैक्टोरियल रहला माइनस इन रहला यार प्रत्येक ईच टर्म रे h रो पावर अछि बाय h स्क्वायर रहला h स्क्वायर कैंसिल रहला. एबे लिमिट पके दियो माइनस 1/2 फैक्टोरियल मींस 2 एडी h अछि ना 0/3 फैक्टोरियल 0 0/4 फैक्टोरियल 0 सिंस ऑल टर्म कंटेन द पावर ऑफ h. सो दिस आर टर्म इज 0. नेक्स्ट टर्म सब जाक 0 हो जियो. सो 0 प्लस 0 और माइनस एटा केतले 1/2 माइनस 0 plus 0 then minus 0 in asila. So this is equal to minus 1/2. So the left hand limit is minus 1/2.
and what will be the right hand limit? Sorry, right hand limit is minus 1 by 2. So what will be left hand derivative? So f at s 0 minus, similarly f at s 0 minus equal to limit s tends to 0 f of 0 minus h minus f of 0 whole by minus h la. Okay, 0 minus h avada. So f of minus h, substitute minus h in place of x, and 1 minus minus of minus h la, तो e to the h la 1 minus e to the power h by h minus 1 by h la. So this is equal to 1 minus eta e to the h la minus h by h square la. Okay, so 1 minus h minus e to the plus h होबो काईटा minus h रा plus h देखबले मु एरिया एडजस्टमेंट कर दोचे एटा प्लस हला एडी मध्ये हम लिमिट टा पकले कोन होची 0 by 0 फॉर्मूला किंतु वर्तमान हम e to the h रा एक्सपेंशन लेखिया. सो e to the h रा एक्सपेंशन ले जो माइनस थिले से प्लस h जियो माइनस h रा प्लस h जियो एडी e to the h रा एक्सपेंशन कोन होबो एटा इन प्लस h ला एटा h स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल होबो प्लस h क्यूब by 3 फैक्टोरियल होबो प्लस h फोर्थ by 4 फैक्टोरियल सब जगह प्लस प्लस होबो. तो 1 minus h रहला minus e to h ले 1 plus h. So this is equal to 1 plus h square by 2 factorial plus h cube by 3 factorial plus h fourth by 4 factorial. All term are positive quantity. तो एडी हमर कोन आसियो. So this is equal to 1 minus h minus एति अछि. ओके, तो 1 एटा देखो एटा मल्टीप्लाई करिया में 1 minus 1 कैंसिल होला एटा minus h and this will be कोन आसियो. So this is equal to, but here कोन होबेला minus h होबो ना एटा कोनला minus h होबो. सॉरी एटा होची minus h होबो एटा minus h स्क्वायर एटा कोन होची ना this is equal to minus h स्क्वायर होबो. ओके, सो ये कोन आसिला हमरो minus h स्क्वायर हला and this is equal to 1 minus h. Okay, so this is equal to एटा 0 plus h minus h हला. So this is equal to देखो आमे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बाहर करछे सेठी 0 प्लस थिला एठी 0 माइनस करछि. मु से प्रॉब्लम कोन करली f एट 0 माइनस करी बेले अगेन आउथर मु कहूची लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाय माइनस h सेठी कोन थिला प्लस h थिला. सो एठी कोन पडियो f ऑफ माइनस h पडियो f ऑफ माइनस h रे हम एक जगह रे कोन पकया जाय दी एक जगह रे माइनस h सब्स्टिट्यूट करिया. तो 1 माइनस e to minus of minus h ले e to h ला बट एडी केते अछि e to minus h एडी भी हमर पडियो कोन होबो माइनस h पडियो सेटा माइनस h होबो माइनस e to minus h माने 1 minus e to minus h by minus h ला f ऑफ 0 केते 1 ला. ओके, एडी माइनस h अछि. सो एडा केते होबो 1 minus e to h ये माइनस माइनस प्लस h ला by minus h square हला. ओके, so 1 plus h minus e to the h by minus h square बुझियो तो एडा को हम जदी एलसीएम काढिया माने एडा कोन होबे माइनस h होबो ना नै न्यूमरेटर माइनस h रहइबो एली केते रहला 1 minus e to the h ये केते माइनस माइनस प्लस h होबो by minus h तळे माइनस h कोन होबो. सो दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर होबो. एडा कोन होबो जे एडा तमरो h स्क्वायर होबो. तो h स्क्वायर ले कोन होबो 1 plus h minus e to the h by h स्क्वायर हला. देखो माइनस h by माइनस h ले कोन होबो h स्क्वायर होबो ना माइनस में प्लस हला हला एडा कोन हला 1 plus h हला एडा कोन होबो एबे e to the h रे एक्सपेंशन दा पकेबो e to the h रे एक्सपेंशन ले सब जगह प्लस आकासियो 1 plus h square by 2 factorial plus h cube by 3 factorial h fourth by 4 factorial इन जासिला. एबे 1 plus h अछि plus 1 minus 1 कैंसिल होला plus h minus h कैंसिल होला आर होला एति रहला. एबे कोन करिया मैं सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एडी माइनस टा रहला मध्ये हम h स्क्वायर टा कॉमन करिया h स्क्वायर टा कॉमन काले एडी कोन रहला 1 by 2 factorial एडा कोन हो h स्क्वायर अछि plus h स्क्वायर अछि ना एडा माइनस h स्क्वायर होला. अरे एडी माइनस टा मतलब हम h स्क्वायर कॉमन काले कोन अछि 1 by 2 factorial होला प्लस h स्क्वायर कॉमन जायछि आर होला प्लस हबो
h by 3 factorial यदि h square जाइए h square by 4 factorial by h square है तो h square कैंसल है ये माइनस टाइगर अच्छे है h square कैंसल है it is plus 0 all terms are 0 plus so this is equal to minus 1 by 2 so the left hand derivative is also minus 1 by 2 so here f dash 0 plus f dash 0 plus is equal to f dash 0 minus is equal to minus 1 by 2 therefore fx is differentiable at x is equal to 0 and it is also continuous at x is equal to 0 जेहेतु ए फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए फंक्शन कंटीन्यूअस है आम प्रथम राइट हैंड डेरिवेटिव बाहर कली तापर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मु ताइरे एडजस्ट कली बुझी पारला क्लियरली ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन fx equal to cot x at x is equal to pi by 2 now we test differentiability and continuity of the function here fx equal to cot x and what will be f pi by 2 so this is equal to cot pi by 2 okay so cot pi by 2 equal to cos pi by 2 by sin pi by 2 so cos pi by 2 0 by sin pi by 2 1 okay so this is equal to 0 by 1 is equal to 0 now right hand derivative we test right hand derivative at x is equal to pi by 2 so f dash pi by 2 plus so f dash pi by 2 plus is equal to limit x tends to pi by 2 sorry limit h tends to 0 f of pi by 2 plus h minus f of pi by 2 whole by h okay so this is equal to limit h tends to 0 what is f of pi by 2 plus h so this is equal to cot of pi by 2 plus h minus f of pi by 2 f of pi by 2 माने एडी cot 0 अछि किंतु 0 लेखनी आमे एडी कोन करिया पड़ियो so this is equal to or 0 sorry cot pi by 2 is equal to 0 so एडा 0 आसला 0 by h limit h tends to 0 cot 90 plus theta तो cot 90 plus theta is equal to what tan theta so tan h by h and you know limit h tends to 0 tan h by h is equal to 1 okay now cot pi by 2 रे हमरो 0 होला because cos pi by 2 by sin pi by 2 0 by 1 होची 0 so इटा हमें 0 पके देले डायरेक्ट अच्छा cot 90 plus theta होची tan h sorry 90 plus h lies in second quadrant in second quadrant cot is negative so cot negative na so minus tan h चला minus tan h by h equal to minus 1 okay what is the left hand derivative at x is equal to pi by 2 so f dash pi by 2 minus limit h tends to 0 f of pi by 2 minus h minus f of pi by 2 by minus h and this is equal to limit h tends to 0 cot of pi by 2 minus h minus 0 by minus h but cot of 90 minus theta 90 minus theta lies in first quadrant cot is positive everything is positive so limit h tends to 0 cot 90 minus h equal to tan h एटा 0 होला by minus h होला and this is equal to minus 1 so left hand derivative is 1 is minus 1 and the right hand derivative is also minus 1 therefore cot x is differentiable at x is equal to pi by 2 and it is also continuous at x is equal to pi by 2 because we know every differential function is continuous. So dear student, to see all the video classes of continuity and differentiability and do the assignment and the exercise problem of the element. So in the next class we do some problems of differentiability short questions, then we start
then we differentiate of a chain rule function, derivative of the composite function using chain rule. Thank you.